आज हम बात करेंगे 3D कार्तीय निर्देशांकों में लैप्लास समीकरण, दैट इज टू से लैप्लास इक्वेशन इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशन में जैसा कि हम जानते हैं लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा 2 फाई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 फाई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर plus delta 2 phi by delta z square is equal to 0. Let the solution of equation 1 is phi xyz is equal to capital X function of x, capital Y function of y and capital Z function of z, जो कि चरों के पृथक्करण की विधि है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस समीकरण को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, देन वी विल हैव डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई जेड, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा स्मॉल एक्स, डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स जेड डेल्टा कैपिटल वाई अपॉन डेल्टा वाई and delta phi by delta z is equal to capital yx delta capital Z by delta small z। और दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इक्वेशन 3, 4 और 5 होगी, दैट इज टू से वाई जेड एक्स डबल डॉट मीन्स सेकेंड डिफरेंशियल एक्स वाई जेड वाई डबल dot, that is the second differential of y, and similarly x y z double dot. So if we replace this equation, these equation 3, 4, 5 in equation number 1, so what we have is yz x double cap plus xz y double cap plus xy z double comma के लीजिए is equal to 0. If we divide this equation throughout by x, y, z, then we will have x double comma by x plus y double comma by y plus z double comma by z is equal to 0. Now समीकरण 6 की लेफ्ट हैंड साइड में पहला पद केवल x पे डिपेंड करता है, दूसरा पद केवल y पे डिपेंड करता है, तीसरा पद केवल z पे डिपेंड करता है और तीनों मिलके 0 देते हैं, जो तभी मुमकिन है जब तीनों अलग अलग किसी कांस्टेंट के बराबर हो। लेट x डबल डॉट बाई x इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, y डबल डॉट बाई y इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर एंड z डबल डॉट बाई z इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, वेयर गामा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन वी विल गेट द इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 8 x डबल डॉट प्लस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, y डबल डॉट प्लस बीटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 and z double dot minus alpha square plus beta square z is equal to 0, where gamma square is alpha square plus beta square। और ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके हल साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल होंगे। तो माना इन समीकरण 8 के हल है x फंक्शन ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू c1 साइन अल्फा x प्लस c1 डैश कॉस अल्फा x, y इज इक्वल टू c2 साइन बीटा y प्लस c2 dash sin beta cos beta y and z is equal to c3 sin hyperbolic gamma z plus c3 dash cos hyperbolic gamma z, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस है समीकरण 8 की। अगर हम थर्ड समीकरण को देखें तो उसमें हाइपरबोलिक आ जाएगा, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये जब मान वापस रखें, दैट इज़ फाई एक्स वाई जेड इज़ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और इनकी वैल्यू अगर हम रखें समीकरण 9 से, तो विल गेट इक्वेशन नंबर 10। इन जनरल हम अल्फ़ा बीटा की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें समेशन फॉर अल्फ़ा समेशन फॉर बीटा, तो समीकरण नंबर 11 आ जाएगी। यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 and beta is equal to 0, then we will get a special solution as x double dot is equal to 0, y double dot is also 0 and z double dot is equal to 0. So if we integrate this equation, we will get the first differential, and we have x dot is equal to a1, y dot is equal to a2 and z dot is equal to a3,
And if you further differentiate this equation, we will get the value of x, y and z, and on the right hand side we will have a1x plus a1 dash, a2y plus a2 dash, a3z plus a3 dash. So the solution in this special case is equal to xyz is a1x plus a1 dash into a2y plus a2 dash plus into a3z plus a3 dash. So that will be the general solution in this particular special केस. अब हम इस इक्वेशन की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और वो इस आर्टिकल है आपका आयताकार बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना. सो यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके डायमेंशन एक्स के अलॉन्ग ए, वाई के अलॉन्ग बी और जेड के अलॉन्ग सी है. और जो टॉप वाला सरफेस है विच इज़ उसको वहाँ पे पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू वी एक्स वाई दिखाया गया है. तो माना ए बी सी भुजाओं वाला एक आयताकार बॉक्स है. इसके 6 फलक होंगे, ऑब्वियसली 6 फलक होंगे. तो जो टॉप वाला फलक है वो z इज इक्वल टू सी के अलावा बाकी जो भी फलक है, यानी एक तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसके अलावा x इज इक्वल टू a हो जाएगा और y इज इक्वल टू b हो जाएगा. इन सभी जगहों पर विभव का मान 0 है. केवल z इज इक्वल टू c पर विभव का मान v फंक्शन ऑफ एक्स वाई है. बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए ऑफ कोर्स वी विल यूज द लेप्लास इक्वेशन, दैट इज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 means delta 2 phi by delta x square plus delta 2 phi by delta y square plus delta 2 phi by delta z square is equal to 0. और इस समीकरण का सोल्यूशन जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा, phi x y z is equal to x x y y z z. और जैसा हमने थोड़ी देर पहले इसका x x y और z के मान भी लिखे थे, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ जाएगी जिसमें कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z के सॉल्यूशन हो जाएंगे. और हमारे पास कांस्टेंट होंगे c1 c1 डैश, c2 c2 डैश, c3 c3 डैश, जिनको हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस. सो वी विल हैव फर्स्ट बाउंड्री एट x इज इक्वल टू 0, और जैसा कि हमने ऊपर देखा वहाँ विभव का मान 0 है. सो फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. सो समीकरण 2 में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0. अब इसमें वाई जेड तो एक्स के फंक्शन है नहीं, तो कौन 0 होना चाहिए? एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो समीकरण 3 से हम देखें, जो एक्स एक्स का मान है वो है c1 sin अल्फा एक्स प्लस c1 डैश कॉस अल्फा एक्स. तो इसमें एक्स स्मॉल इज इक्वल टू 0 पे कैपिटल एक्स 0 बन रहा है. सो वी हैव 0 इज इक्वल टू c1 sin 0 प्लस c1 डैश कॉस 0. So that is equal to c1 dash, which means c1 dash is equal to 0. So we are left with x, capital X function of small x is equal to c1 sin alpha x. That will take equation number 6. Now another boundary condition is at y is equal to 0. So at y is equal to 0, phi is also equal to 0. So you have x y z is equal to 0. Well, x z एक्स जेड वाई के फंक्शन नहीं है. अंबिका वाई के फंक्शन नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू 0. कैसे हो? ठीक है. ओ साहब, नाउ we will take, so y is equal to c2 sin beta y plus c2 dash cos beta y. So if we substitute small y is equal to 0 and capital Y is equal to 0, we will get c2 dash is equal to 0. So we are left with equation y is equal to c2 sin beta y as equation number 7. Now we come to the third boundary condition at z is equal to 0, phi is equal to 0, x y z is equal to 0. Again x y are not the function of z. So what will be 0 is z is equal to 0. So if we use equation 3, that is the third equation of equation 3, that is z is equal to c3 sin hyperbolic under root of alpha square plus beta square into z, that is the value of gamma, plus c3 dash cos hyperbolic under root alpha square plus beta square into z. If we substitute
z is equal to 0, then sine hyperbolic 0 is 0 and cos hyperbolic 0 is 1. So we have c3 dash is equal to 1, and eventually we are left with zz is equal to c3 sine hyperbolic under root of alpha square plus beta square into z. So if we use these equations 6, 7 and 8 in phi is equal to x, y and z, then we have the solution c1, c2, c3 sine alpha x sine beta y sine hyperbolic alpha square plus beta square under root into z. And let c1, c2, c3 is equal to c alpha beta, then we have equation 9 as the solution, that is phi a function of alpha beta is equal to c alpha beta sine alpha x sine beta y and sine hyperbolic under root of alpha square plus beta square into z, and that will take the equation number 9. अब अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने के लिए we are left with two more boundary conditions, that is one at x is equal to a and another is y is equal to b. So now we come to the fourth boundary condition, that is at x is equal to a, y is equal to 0. So from equation 9 we have since sine beta y sine hyperbolic of under root of alpha square plus beta square z is not equal to 0, so we have 0 is equal to c alpha beta sine alpha a. Again c alpha beta cannot be equal to 0, so we are left with sine alpha a is equal to 0, which is sine n phi, that is to say alpha is equal to n pi by a, where n takes the value 0, 1, 2, 3 and so on. Similarly, at x is equal, at y is equal to b, so there is a correction in this PDF, so kindly correct it. If at y is equal to b, phi is equal to 0, therefore from equation 7, since sine alpha x sine hyperbolic under root of alpha square plus beta square into z cannot be equal to 0, so we are left with 0 is equal to c alpha beta sine beta b. Again c alpha beta cannot be equal to 0, we are left with sine beta b is equal to 0 to say sine m pi, so we have eventually beta is equal to m pi by b as equation number 11, and of course m takes the value 0, 1, 2, 3 and so on. So using equation 9, 10 and 11, we have phi alpha beta as c alpha beta sine n pi by a into x sine m pi by b into y and sine hyperbolic under root of n square pi square by a square plus m square pi square by b square, that is function of b. So since sine depends on n, another depends on m, so we can also write as phi function of n comma m as c n m, yeah, c m n sine n pi by a into x sine m pi by b into y into sine hyperbolic under root of n square pi square by a square plus m square pi square by b square into z, then that will take you question number 12. So now we come to the last boundary conditions, which is at z is equal to c. So at z is equal to c, as we have already seen, phi is equal to vxy, so we can write equation 12 as vxy is equal to summation nm going from 1 to infinity cnm sin x के साथ फंक्शन sin y वाला फंक्शन और sin हाइपरबोलिक वाला फंक्शंस. वेल दिस समीकरण जो 13 है वो एक डबल फूरियर सीरीज है. फूरियर सीरीज के बारे में आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. सो to solve this double Fourier equation, what we are going to do is we will integrate this equation from 0 to a and 0 to b. So that can be written as 0 to a, 0 to b, vxy sine n dash pi by a into x sine m dash pi by b into y dx dy is equal to summation going from different values of m into n, integrating 0 to a, have a sine n dash value, we have sine n value, and we will differentiate, we will integrate with respect to x, we have sine m dash value, sine m value, and we are integrating with respect to y. So well, the integral 0 to a sine n dash and sine n, that is equal to a by 2, we can solve this integration. This is pretty simple integration.
and since you people are the mathematics students, you can eventually solve it easily. So this will be a by 2 if n takes the value of n dash, that is n is equal to n dash. For other values of n, that is n not equal to n dash, this value equal to 0. And similarly, this another equation with m dash will give you b by 2 for m is equal to m dash, and for is equal to 0 if m is not equal to m dash. तो अगर हम नॉन ज़ीरो वैल्यू कंसिडर करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी डबल इंटीग्रल 0 to a 0 to b vxy sin n pi by a into x sin m pi by b into y dx dy is equal to c n m ab by 4 sin hyperbolic of equation. So we will have the value of c n m as equation number 17, and if we replace this equation 17 in equation 13, we will get the solution. Now फलक z is equal to c पर यदि विभव phi is equal to v function of xy is constant v0, so we are taking this as a special case. In that particular case, 0 to a 0 to b vxy integral sin n sin m with the dx dy is equal to v0 integral 0 to a sin n sin m dx dy. So again 0 to a sin n pi by a into x dx is 2a by n pi if n is equal to odd, and if we take the even value of n, then this value comes out to be 0. Again, this is a simple integration which you can easily solve. Similarly, 0 to b sin m pi by b into y dy will give you 2b by m pi if of course m is odd, and if m is even, this comes out to be 0. So if we use this equation 18, 19 and 20, and of course equation 17, then we will get the value of c and m as 16 v0 upon n m pi square sin hyperbolic of this equation with c as equation number 21. So if we substitute the value of c and m, we will get phi is equal to 16 v0 by pi square summation for nm 135, because this value is only true for the odd values, so we'll take 1, 3, 5, 7 and so on up to infinity. 1 upon nm sin n pi x by a into sin m pi y by b into sin hyperbolic of under root of n square pi square by a square plus m square pi square by b square into c into z, of course, divided by sin hyperbolic of under root of n square pi square by a square plus m square pi square by b square into c. So this is the required, or rather the desired potential inside a box.